I am just reading out the facts which are registered in the records. सेंटर की स्कीमों का लगना अभी हुआ. ये उज्ज्वला आयुष्मान J&K is the first union territory or first state in the country which has implemented 100% universal आयुष्मान. अब उन स्कीम्स में मैं नहीं जाऊंगा, गृह मंत्री जी के जवाब में आपको मिल ही जाएंगे. अब कश्मीरी आप गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था. इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी ने जनवरी 1, 2016 में देश भर में समाप्त कर दी, ताकि सरकारी नियुक्तियों में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, क्योंकि ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक मिलते थे किसी को रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था इंटरव्यू में, इंटरव्यू 100. जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू हुआ राज्यपाल शासन लगने के बाद, नहीं लगाया गया 370 की आड़ में कि भाई अपने लोगों को कैसे हमने नियुक्तियां देनी है. ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं. सेल्फ अटेस्टेशन अब वहां लगी, अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं. और कश्मीरी पंडितों की प्रतिनिधित्व को लेकर के ये बात है. आई थिंक आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ कोर्स वाज बिटवीन टू न्यूली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द बिगेस्ट exodus which has ever happened is Kashmir, and that too within the country, though it doesn't have the equal parallel with 1947 because that was partition resulting from the creation of a separate state. But here within the country, you had displacement of such a huge population, leaving their homes and hearths overnight. और अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं सामूहिक, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, is it not our collective responsibility to restore that sanctity and that culture and tradition of Kashmir, for which Kashmir is known all over the world? And is that possible in the absence of Kashmiri Pandit? कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वो कश्मीर की रिवायत और कश्मीर की तहजीब और संस्कृति, जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था, तो अगर ये करा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? और बात आई लद्दाख की, जयमियांग जी ने बात की बहुत सारी स्कीम्स की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भूल गए, तो मैं जोड़ दूं कि सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख का एक डेलीगेशन लेकर के आया था दिल्ली में सन 1948 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला. तब से लेकर आज तक 70 साल में गए, कई प्रधानमंत्री आए गए, कई सरकारें आई गई. शायद ये हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी. दिस इज द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, दिस कैन बी चेक्ड. So these are the political sequence which makes us believe otherwise. अब बहुत ज्यादा इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन दादा ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद जंग हुआ वहां पर, और अगर जैसे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ नेहरूवियन एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन, अगर आकाशवाणी भवन जाकर के नेहरू जी यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर ना करते बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए, तो आज ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा होता, ये पीओजे के अलग ना होता. और आज गृह मंत्री को उनके लिए नॉमिनेशन सीट नहीं लानी पड़ती, जो आज इस विधेयक में आ रहा है ना कि but the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was receiving from his Commander-in-Chief and the General Staff was that the war has reached a stalemate, and so therefore there was no possibility of making any further gain, and that is why the ceasefire happened. And if you do not have faith in me, you can Google a Guardian article which was published just about a couple of months back, citing the Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army, who said that a stalemate has been reached and no further progress is possible, and that's why a ceasefire was called. Yes, I fully trust you. See, Dada, no, I'm not yielding. नहीं, अभी नहीं. एक मिनट बात होने दो, ऐसा नहीं है.
Manish ji, I fully trust you, but I am not allowing myself, I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of government is Prime Minister, so it is the responsibility of the Prime Minister. हमने तो यही कहना ना कि प्रधानमंत्री ने जाके सीज फायर का घोषणा की, हमने ये नहीं कहना कि उसको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी या किसने दी थी कि उसको कसूरवार ठहराएगी. The ultimate responsibility will lie on the head of the state and the first minister of the country. See what I am trying. See, देखिए मनीष जी, that subject will come up. No. See, that subject. Honourable Minister Yes. Diwaji, So the entire country is watching this debate. Yes. We Thank should you. not shift the blame here and there. Thank you. Because these are all happened in the British rule. This matter will come up for discussion if tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire. Then we can give this argument that so and so advised him, he was misguided, etc., etc. But the matter of fact is, as the whole world saw, it was Prime Minister speaking on the Akashvani. So that's what the entire world knows. Anyway. So I therefore not taking long. अब ये आ रहा है कि इलेक्शन बार-बार इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे? तो शुरू से ये वाक्य से शुरू हुआ. तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ट्रेजरी बेंचेस से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है. यू कैन आस्क इलेक्शन कमीशन बट नॉट हियर. हम तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 365 कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमारा कार्यकर्ता इस तरह सक्षम है, उसको रात को भी सोए हुए जगा ले तो उठ करके भारत माता की जय कह के निकल पड़ता है अभियान. हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं. लेकिन जब उचित एक प्रणाली है, हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते. पॉसिबली योर thought is conditioned by what the UPA was doing or what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not. To hold election. Yes. So whenever Why are you not hold? Yes, sir. Absolutely, sir. Whenever the election commission announces, we are ready. We are ready. We are ready, sir. We are ready. Honourable members, tomorrow, I think that tomorrow Home Minister is going to reply. So, now I'm going to conclude. The legitimate questions were asked by Manish and you. I think that answer will be given by the Home Minister tomorrow. Yes. Prohibition, anything from this government part? No. Whether any prohibition that the government would not be able to persuade the election commission that the situation has come to such a pass that election needs to be held? Adir. Now I'm concluding. Minister is participating in the debate. The reply has to be given by the minister. Already questions were raised. Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then take a final call. So let's all of us trust the wisdom of Election Commission and not appear to be interfering in functioning. Maybe UPA was doing it, Congress was doing it, they think we also do that, but we don't. So I think at the end, अब ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन नहीं हो रही, संविधान नहीं लागू हो रहा, लोकतंत्र नहीं हो रहा, but we were the party which introduced 3-tier system in the. I am concluding by that. DDC का चुनाव पहली बार 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, तो अब हुआ. आज से 3 साल पहले, 4 साल. तो वो उसमें क्या रुकावट थी? No sir, that's a fact. You didn't have Zilla Parishads before. Why? And the parties which were ruling were swearing by autonomy, were swearing by self-rule. So how can autonomy be conceivable unless it is autonomy at the ground? To me, to any student of democracy, the self-rule means rule of the ground, of the grassroots. Autonomy has to be born from the grassroots. So not autonomy of the family or self-rule of the family. We have given true self-rule to Jammu Kashmir. We have given true autonomy to Jammu Kashmir. And therefore, please trust us. What happens in future also will be in the best interest of the people of Jammu and Kashmir. We are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047. And Jammu Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today we have a huge lithium store which has been discovered in Riyasi. We have the highest railway bridge in Jammu and Kashmir of the world. We have the longest Asia tunnel, road tunnel.
Chennai Nashri, which is named after Sama Prasad Mukherjee. We have the Purple Revolution, which is being talked over all over the world, born from Jammu and Kashmir, Gulmarg and Bhadrawa, the lavender. So many new avenues and resources which had remained unexplored earlier, thanks to Prime Minister Modi's drive, his push, and also the technology, that we are discovering that. And I'm sure in the next 25 years, when India reaches that pedestal which we have envisaged, Jammu Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So we have a very critical role. I think I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India, of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Thank you. Shri Shrang Appa Bani. माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 पर 4 साल बाद केंद्र सरकार ने सामाजिक बदलाव लाने का ये बड़ा कदम उठाए। सरकार ने वंचित पिछड़े वर्गों को दूसरे राज्यों के तहत संवैधानिक अधिकार देने की दिशा और कदम बढ़ाए, जिसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 5-6 अगस्त 2019 में भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370-35 को रद्द किया है, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम था, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख आता हूं, क्योंकि कभी ऐसा लगता नहीं था कि जम्मू और कश्मीर में 370 कलम ये निरस्त किया जाएगा, बल्कि जम्मू और कश्मीर में जो पीड़ित है उनकी जो हालत देखी जाए तो जम्मू संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के एसटी की सूची में पहाड़ी, गड्ढा, ब्राह्मण, पदारी, जनजाति और कोली समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया है। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ही प्रवासियों ने दिल्ली जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे, तब दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जाने का विकल्प जम्मू कश्मीर ने पीड़ितों में लिया। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 46,517 परिवार है, जिनमें 1,58,976 व्यक्ति जम्मू और कश्मीर सरकार के राहत संगठन के साथ पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में पंजीकरण किया है। जैसे कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का जो पीड़ित है, खासकर जम्मू कश्मीर में रह रहे पीड़ित जनजाति है, उसमें ज्यादा कर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई और कश्मीरी हिंदू को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। ऐसे कई सारे परिवार है कि जिस परिवार के कुछ लोग भी बचे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कई पार्टियों को ऐसा नहीं लग रहा था कि 370 कदम हटाया जाएगा और जम्मू और कश्मीर के परिवारों और लोगों को राहत मिलेगी। आज केवल ये राहत नहीं, तो वहां पर आगे चलकर राजनीतिक रिजर्वेशन भी वहां के लोगों को मिलेगा। पूरी तरह से आज अगर जम्मू और कश्मीर में देखा जाए तो लोग माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि गोली के बंदूक के नोक पर लोग जी रहे थे आज तक। आज पूरी तरह से शांति से लोग जी रहे। जिन्होंने पत्थर हाथ में लिया था, वो आज उनके हाथ को काम देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के लोगों में हो रहा है। तो मैं इसके
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भी बात मैं यहाँ रख रहा हूं, जब 1990 में ये सब हुआ तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1995 में भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार आई, तब बाला साहब के नेतृत्व में पीड़ित पंडितों को खासकर महाराष्ट्र में एजुकेशन रिजर्वेशन देने का प्रयास किया। आज भी महाराष्ट्र में जितने पीड़ित पंडित रहते हैं उसके घर में बाला साहब ठाकरे का फोटो है, क्योंकि उसमें उनको सभी परिवार को एजुकेशन रिजर्वेशन 1% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन होते हैं, जाति के आधार पर कोई बंटवारा चाहता है। मैं खासकर इससे लगकर महाराष्ट्र की एक बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठा समाज काफी बड़ा संख्या में, आज मराठा समाज वहां आंदोलन कर रहे, ओबीसी समाज भी भारी मात्रा में, समाज में दूरी ना हो, इसलिए खासकर केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ध्यान देके समझौता समाज में करना चाहिए, बैठ के दोनों समाज में किसका रिजर्वेशन कम नहीं करके पूरी तरह से मराठा समाज के जितने पीड़ित है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, उसमें राज्य सरकार से मिलकर आप समझौता कर मराठा समाज और ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके ऊपर खासकर भरोसा है लोगों का, वो प्रयास कर रहे, लेकिन केंद्र की इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र की सहायता इसमें आवश्यक है। फिर से माननीय प्रधानमंत्री का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर सर के राज्य में एक शांतता बहाल करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। विपक्ष के कई लोग कुछ भी कहने दो, लेकिन मैं 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में गया था, तब मैं देखा है लोगों के दिल का डर हट गया है, लोगों के दिल में पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री की द्वारा एक सहायता करने जैसा एक माहौल है, और आगे चलकर देश में या विदेश में जितने दादा पर्यटक आते, इतने सालों में नहीं आए, 3 दशकों से, आज विदेश से ही पर्यटक जम्मू कश्मीर में आएगी, और पर्यटक आके ये पूरे देश के आर्थिक रूप से सहायता भी इस द्वारा होगी। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये दोनों विधेयक पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से मैं उसको सहमति देना चाहता हूं। धन्यवाद। AM Arif. Thank you for giving the opportunity to speak on Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and the Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 to express the views of the CPIM. Sir, these bills are nothing but an attempt by this government to keep alive the Kashmir issue ahead of the coming parliament elections. Sir, we have no objection in providing reservation for communities for nominating members of unrepresented communities, but that should not force skewed political interests. Sir, I wish to draw your attention on how this government treated the Anglo-Indian community in this country by taking away the nominated seats from them in Lok Sabha as well as state assemblies, including Kerala a few years ago, which existed there since 1951. Sir, about the nomination. Giving the power to the Lieutenant Governor to nominate members is nothing but giving the BJP to nominate members. Sir, coming to the reservation of the scheduled tribes, we know the double standards of the applied by the BJP government. So we have seen the government boasting about the electing a president from the scheduled tribe community, at the same time kept away her from the inaugural ceremony of this new parliament building. So we no, sir. President is the sole custodian of the parliament. President giving assent to the bills. President giving, sending the summons to the members coming here, and President alone the
addressing the both parliament houses. Sir, both the houses. So, first and most eligible person inaugurate the parliament, but you purposely kept away from the inaugural ceremony, sir. And now you are speaking about the reservation given to the scheduled tribes. Sir, the SC/ST reservation for BJP is nothing but a ceremonial piece like a cherry above the pudding or the cake. But the core of it is still hatred towards the downtrodden sections here. Sir, the discussion of this kind was necessitated by the BJP government out of the way decision to take away the special status of the state of Jammu and Kashmir by virtue of Article 370 of our Constitution and reorganize it into 2 union territories. Sir, so one thing we should understand, it was also against the wishes of our constitutional forefathers who had promised to keep high the aspirations of the people of Jammu and Kashmir while agreeing to join the dominion of India. Sir, our ancestors have regarded Jammu and Kashmir as the crown of India at the top, but this government has downgraded Jammu and Kashmir to the status of clown, only because the majority of the people are Muslims, whom the RSS oppose the ideology. The special status of the Jammu and Kashmir was abolished, which itself shows the intolerance of the BJP government. Sir, I wish to remind the government that they have also not kept the promise of holding the election to Jammu and Kashmir Assembly as the Honorable Amit Shah ji had promised on the floor of this House in many times. I wonder when the appropriate time comes. Will it come in the end of the century, sir? So instead the government is, including the minister, is repeating the rhetoric that it has successfully conducted the election to the local self-government institutions. What is the reality, sir? Sir, I had been in Jammu and Kashmir as a member of participating in the study tour of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs a few months back. Sir, how come this government could claim that with just 15 or 20% of the total voter turnout as a success? 80% of the voters were not participated in the local body elections, sir. Also, I could not witness any development revolution in Kashmir as claimed by this government and the members from Ladakh, except the schemes implementing all over India, Jal Jeevan Mission, PMAY, and Making in India, etc., etc., etc. Sir, even after the abrogation of the Article 370, you could not control the terrorism in the valley. Sir, the news has been coming about the terrorist activities still continuing in the valley. Sir, we all know that the RSS has put forward 4 political agendas as its declared goals. The abolition of special status of Kashmir is just one among them. The others being demolition of Babri Masjid, the enactment of Citizenship Amendment Act to deny the citizenship to Muslims on the basis of religion, and the final one being the Uniform Civil Code, sir. Sir, in all respect, the BJP government is preparing to transform India into a Hindu religious state. And we have just seen the portrayal of Dhanvantari, a Hindu god replacing the national symbol in the logo of National Medical Commission, is a beginning, sir. Sir, the BJP government is portraying the victory in the recently held assembly election to Rajasthan, Madhya Pradesh and the Chhattisgarh as a license to act at its whims and fancies. Sir, I wish to remind the still don't have a mandate. Even half of the voters of India, and if stand united, the opposition parties have a strong chance to win in the heart of the voters, sir. At the end, sir, on behalf of the family members of the great martyrs of the Pulwama, I urge upon the government to conduct a free and fair judicial inquiry upon the truth revealed by the former Jammu and Kashmir Governor Sri Satyapal Malik upon the Pulwama incident. With these words, I conclude my speech. Still, thank you very much, sir. Sir, I rise to support
The first bill, Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023, but to oppose Jammu and Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023. So rightly, when Jitendra Singh ji was speaking, Saugat Rai was commenting from this side also. He was specifically narrated the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of new nation, new India. And he is narrating him as he has done a blunder, Nehruvian blunder. He has used the phrase Nehruvian blunders. Sir, the present India, I'm not going to the details of the wonderful achievement made by Pandit Jawaharlal Nehru, the secular fabric and the secular symbol of India, who has made India in this form, and it is being as Union of India only because of Pandit Jawaharlal Nehru, and even Kashmir is still an integral part of India. That is only because of the policy enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru, his diplomatic policy which he has adopted as far as Kashmir is concerned. Otherwise, the situation of India would have been different, because most probably the Kashmir would not have been, even the present position would not have been there as far as Kashmir is concerned. So I urge upon the Honorable Minister to withdraw that word, Nehruvian blunders, as far as this Kashmir issue is concerned. Such a observation is not expected from a responsible minister from the cabinet. It is not expected. So first of all, I would like to request the Honorable Minister kindly withdraw the remarks made by the Honorable Minister, the responsible minister, making Nehruvian blunders as far as this Kashmir situation is concerned. Sir, as far as the bill is concerned, the first bill is the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill. Absolutely, it is a harmless bill, definitely. The socially and educationally backward classes has to be replaced or substituted in the place of weak and privileged classes. Fully, I agree with it, and that can be passed. There is no doubt about it. But as far as the Jammu Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023 is concerned, sir, we are all well aware that on 5th and 6th of August 2019, elaborate discussion took place regarding Article 370 and also the State Reorganization Bill, Jammu Kashmir State Reorganization Bill. Detailed discussion took place. We have made our reservation as far as J&K State Reorganization is concerned. Sir, I would like to know from the Honorable Home Minister, what is the constitutional propriety of this government going for an amendment to a bill which is already been made by the Parliament, which is pending before the Supreme Court for final verdict? Sir, as far as to my limited information, it is already been, the hearing of the matter is already over. The matter is pending before the Supreme Court. We all know that a matter which is pending before the Supreme Court can never be discussed even in the House. That is the rule which is being observed by us. But here what the government is doing, government is coming with a bill and moving an amendment bill. That bill is pending before the Supreme Court for the final verdict. The hearing is over. Why don't the government wait for the final verdict? That too, the constitutional validity of the bill is being questioned. And it is a 5-member constitution bench is looking after that issue. When that matter is pending, you are bringing with amendments, means it is not with bona fide intention to give reservation to the scheduled caste and scheduled tribes, and not with an intention to give the Kashmir migrants or for the displaced persons. The intention of the second bill, that is a State Reorganization Amendment Bill, is lacking bona fides. Hence, I oppose the bill on that ground itself, because it is a matter pending before the judicial. We know the rules of practice as far as the rules and procedure and conduct of business of our Lok Sabha also. No matter which is pending before the Supreme Court can be agitated or be discussed in the House. That is the precedent, that is the convention, that is the rules, and rules of practice is there. At the same time, the government is coming with an amendment bill so as to amend a bill statute which is pending before the Supreme Court is not good, especially a constitution bench. 5-member constitution bench is agitating or looking into this constitutional validity of the bill. That is the first point which I would like to make. Sir, coming to the bill, that is Section 15A and Section 15B, two new provisions are to be incorporated other than the reservation. Sir, 15A, notwithstanding anything contained in subsection 3 of Section 14, the Lieutenant Governor of the Union Territory of
Jammu and Kashmir may nominate not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmir migrants, according to 15A. According to, by virtue of 15B, it will be from the displaced person from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir to the Jammu Kashmir Legislative Assembly. Sir, my question is, what is this nomination? And the Legislative Assembly, you have not reconstituted the Legislative Assembly. You are not ready for an election process. You know that the delimitation process is already complete. Almost all the formalities have already been complied. Why there is an inordinate delay in having the elections? Why the inordinate delay in reconstituting the State Legislative Assembly? Why you are providing this unfettered authority to nominate a particular person from a particular community to the Lieutenant Governor? That means this is inferring the fact that you are not going to conduct the election. You have no proposal and you have no intention to have the proper elections so as to put up a populistic government in the state of Jammu and Kashmir. That is why you are giving the nomination authority to the Lieutenant Governor, means you are not believing in a populistic government. This nomination process has to be taken back. At least the nomination or the nomination of a particular person should be on the advice of the elected government or at least the advice of the State Legislative Assembly. Unfortunately, that is not being done, and it is unfettered authority, discretion is being provided to the Lieutenant Governor by virtue of Section 15A and Section 15B of the Act. That is totally undemocratic. That is to be opposed. So I urge upon the government, kindly review the position of nomination by the Lieutenant Governor. Instead, you may give the authority to the State Legislative Assembly so as to elect 2 representatives, one from the displaced persons category and another from the migrant Kashmiris category. That is the proper democratic forum or the proper democratic way by which 2 persons from these 2 categories have to be elected. That is the second point which I would like to make. Sir, the point is, at the time of that is general discussion on the Kashmir issue, sir, at the time of the discussion of on 5th and 6th of August 2019, what the assurance given by the Honorable Minister, Home Minister Sri Amit Shah ji, that is election will be conducted at the earliest and the populistic government will be put in place. He has used the word, still I remember, at the earliest. And also there was a genuine demand from all corners of all walks of life. Everybody was demanding to get back the statehood status. That will also be considered. These are the 2 promises being made by the Honorable Home Minister. I think that the first is, at the earliest, the election will be conducted and a populistic government will be put in place in the place of this government, Lieutenant Governor. That will be done. But unfortunately, even after 5, this is 2020-23, it is fag end of the 2023 calendar year. Even after 5 years of this gap, the government, union government, is not able to reconstitute the State Legislative Assembly and to conduct the election. Then how can you win the confidence of the people of Jammu and Kashmir? That is the question. Why the government is not able to conduct the election? Why you are not able to have reconstitute the Legislative Assembly of Jammu Kashmir Union Territory? Why? Because that itself shows that you are not able to bring normalcy back in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Is not the reason by which the election cannot be held. Is not the reason by which the Legislative Assembly could not be constituted. That is why we are suggesting that the normalcy has to be, yes sir, I am concluding. The normalcy has to be brought back. Almost all the members have already cited. Recently, one commanding officer of a battalion is killed. Major is killed. 3 captains, so many police security personnel have already been killed. So you are claiming that the normalcy have come back. So at the same time, sir, last point, at the same time a new term has been spelled out by the security forces, that hybrid militancy is there. Yes, I do agree that there is no stone pelting in the Union Territory of Jammu and Kashmir, but hybrid militancy is there, is being admitted by the security personnel of the Jammu and Kashmir. So that is the reason by which you are not able to hold the election and to bring back normalcy in the state. Sir, my suggestion is, first you have to take the people of Jammu Kashmir into confidence. Without taking the people of Jammu Kashmir into confidence, you can never win over the political situation, turbulent situation in the state of Jammu and Kashmir or in the Union Territory of Jammu and
Kashmir, but that is still lacking. You are trying to take political advantage out of the Kashmir situation, not to win the minds and the hearts of the people of the Jammu Kashmir. Then only you can win over the situation in the state of Jammu and Kashmir and can bring back normalcy. For that, the government has to take positive initiative steps. One of the major steps is to bring back the normalcy, to hold the election, and second is to give back the statehood status to the state of Jammu and Kashmir. With this point, I conclude. Thank you very much, sir. Shri Asaduddin Owaisi. शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं और दूसरा जो बिल है सर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है। सर यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या ये बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और ये रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे। कौन नामजद करेगा? एक अवाम की मुंतखबशुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आइन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। अवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? आप कुछ रेस्टोर नहीं किया। आप लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं। वहां का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोज लोग रहे, सेक्रेटेरिएट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में, पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे होटल खाली हैं। तो और आखिरी बात सर, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या? बताइए भाई, अंबानी साहब है, अदानी साहब है, टाटा साहब है, सब है, आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर। एमओयूज तो करोड़ों रुपए के हो गए। आपने ख्वाब तो इतने दिखाए, मगर वो बेचारे वो ख्वाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है सर। और आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे? 24 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे। आपने जेरीमैंडरिंग करके आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दिए वहां पर, मगर अब भी आपको डर हो रहा है। आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे, बता रहा हूं आपको। वैली तो दूर की बात है, वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे। जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर।
मैं कंक्लूड कर रहा सर, ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। थैंक यू। जबी सिंह ग्रिल मिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मेरे को तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट पे बोलने का मौका दिया। ये जो एक्ट है ये काफी मददगार सिद्ध होंगे। जो लोगों में कंफ्यूजन है, जो अथॉरिटीज में कंफ्यूजन है, उसको दूर करने पे। सर, हम कश्मीरी